Hello dear students, welcome to Sreedhar Bhubaneswar. This is your faculty of English Pradosh Misra. Get ready for an interesting session and आज आम गोटे banking exam उपरे गोटे English session question जाको start करिवा. So before I do that, please remember that our new offline batch for banking, SSC, railways, OSSC, OSSC, everything new batch starts from 23rd of October 2025. For further details, please visit our branch. Okay. सो बैंकिंग एग्जाम में समस्त प्रिपेयर करथबो आज सेट जो रहिला सेठी हमें बैंकिंग रिलेटेड क्वेश्चन जाक डिस्कशन करिबा तो एई सेट रो ओवरऑल हम कोन डिस्कशन करि परिबा एरर डिटेक्शन रहइबो यस सर क्लोज टेस्ट रहइबो रीडिंग कम्प्रिहेंशन रहइबो पाराचैम्बल रहि परियो फ्रॉम बेसिक्स हम हमर जर्नी टाज टू स्टार्ट करिबा सो फर्स्ट हम क्वेश्चन एटी सॉल्व करिबा देखंतु एटा होची एरर डिटेक्शन क्वेश्चन रहिछि से कहिछि read each sentence to find out if there is a grammatical error or idiomatic error तो को पार्ट एरर रे हम खोजिबा तो हमर प्रथम अप्रोच रहइबो कोन हमें फर्स्ट सब्जेक्ट एंड वर्ब को देखिबा प्रथम हम वर्ब को देखिबे वर्ब कोन अछि डू नॉट रियलाइज यस और नो सो डू नॉट रियलाइज इज द वर्ब पार्ट नै कि तो के रियलाइज करनाते ना मोस्ट पीपल एबे हमें सब्जेक्ट वर्ब रूल अप्लाई करबा पीपल इज प्लूरल देन डू नॉट रियलाइज प्लूरल ठीक अछि एडी कोन लिखा हला दैट इज ए कंजंक्शन कंजंक्शन पर कौन आसे आउ गोटे सब्जेक्ट वर्ब आसे हाँ ना नहीं तो ये सब्जेक्ट कौन अच्छी मेडिकल इमरजेंसीज एटा प्लूरल अच्छी यस और नो तापर वर्ब प्लूरल कौन अच्छी आर नियरली ऑलवेज करेक्टेबल एठी बी वर्ड टा हमर इनकरेक्ट अछि ए बी पार्ट काट दो आर नियरली ऑलवेज करेक्टेबल इफ डिटेक्टेड अर्ली ता माने कोन इफ दे आर डिटेक्टेड अर्ली अप्रोच बुझी हला एमिति तमे क्वेश्चन जा करिवो तने यार आंसर हमर को पार्ट रहला आंसर इज इन पार्ट सी Got it? It should be. आगो जीवा वर्तमान give me a second. Next question को देखिए बाइट इसे देखो फर्स्ट देखो over the last 15 years एडी over टा कोन गोटे प्रीपोजिशन फ्रेज टा काट दबा एडी सब्जेक्ट कोन रहला a significant body of research एटा टोटल पार्ट ऑफ सब्जेक्ट रहला एडी सब्जेक्ट रहला कोन significant body that is singular no ताले वर्ब मध्ये सिंगुलर हवा कथा एले कोन लिखा छै एडी वर्ब टा has demonstrated then subject verb agreement is okay it is that रहला that माने ओडा कंजंक्शन आपरे हम आउट सब्जेक्ट वर्ब आसीबो ह ना नहीं तो एडी सब्जेक्ट कोन अछि each of us each of पर नाउन प्लूरल आसे मात्र वर्ब टा हमर सिंगुलर आसे तेने कोन each of us is a disturbingly unreliable rate ए पार्ट रे भूल रहला नहीं काई भूल रहला ना तक ए हो जे गोटे आर्टिकल पर डिस्टर्बिंगली ly वर्ड अछि ly वर्ड माने सेटा कोन हेतिबो एडवर्ब हेतिबो जानिचो ly वर्ड रो रूल ता तुम जानिचो कि मो कहि दोची ऑलवेज रिमेंबर जदि नाउन पर ly लागि छी दैट इज एन एडजेक्टिव जेमते कि फ्रेंड रे ly लिखले कोन होय फ्रेंडली बट जदि गोटे एडजेक्टिव रे ly लागिबो दैट इज एन एडवर्ब जेमते कि मो कहि परि क्लेवर ly लगले कोन होची क्लेवरली दैट बिकम्स एन एडवर्ब गेटिंग इट तो सेम मन रखिया पड़िबो सो व्हाट्स द एप्लीकेशन हियर ना आमे कोन करिबा ना आमे जे गोटे आर्टिकल डे यूज करछु डायरेक्टली गोटे नाउन बाकी यूज हो जेमते कि ही इज बॉय कहिबानी ही इज ए बॉय सिमिलरली ही इज गुड बॉय कहि परिबानी कहिबा कोन ही इज ए गुड बॉय सेमते ही इज वेरी गुड बॉय कहि परिबानी ही इज ए वेरी गुड बॉय दैट मींस हमें पैटर्न कोन जानिलु आर्टिकल पर एडवर्ब तापर एडजेक्टिव तापर गोटे नाउन बेसिक आइडिया तो से रूल डाटी पकाओ एटी एटा रहला आर्टिकल एटा रहला एडवर्ब एटी गोटे एडजेक्टिव रहा कथा ना नहीं तेनो गोटे अनरिलायबल हबो अनरिलायबल नहीं अनरिलायबल रेटर ऑफ अदर पीपल्स परफॉर्मेंस गेटिंग इट तो एरा टाइट कोड रहला हमरा डी पार्ट रहला क्लियर मन रखितबे जिंस जाको नेक्स्ट जीवा एटी लिखा छै सिमते कोन चिल्ड्रन हु मेक हेल्दी हार्ड चॉइसेस देखो एटी हम देखो एटी कोन हे गला चिल्ड्रन हैला सब्जेक्ट हु लागला माने रिलेटिव क्लॉज अछि रिलेटिव क्लॉज रो रूल कोन जतरा हम हु यूज करछु हु पर डायरेक्टली वर्ब आसीबो जेमति कि ही इज द बॉय हु गॉट द प्राइज एमते कहछु ना नहीं तो हम देखिया पड़े हु पर वर्ब आसीबा कथा सो देखो एठी चिल्ड्रन हु मेक हेल्दी हार्ड चॉइसेस नाउ दिस सब्जेक्ट हियर चिल्ड्रन इज प्लूरल दैट मींस एडी वर्ब प्लूरल आसीबो ना नहीं तो एडी वर्ड कोन लिखा छै रिड्यूसेस एस लागि जे माने एटा कोन सिंगुलर हे गला तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रहला एटा प्लूरल हबो माने एठी हम कोन लिखिया कथा रिड्यूस लिखिया कथा गेटिंग इट तो एठी रिड्यूस हबो देयर चांसेस ऑफ डेवलपिंग हार्ट डिजीजेस लेटर इन लाइफ तो एठी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रहला एरर इज इन पार्ट बी क्लियर एमते बुझा जिनसटा नेक्स्ट को जेबा वर्तमान गिव मी अ सेकंड यस
एटी मेंशन लिखा है इंडिया इज देखो एटा सब्जेक्ट वर्ब रहला इंडिया पर इज रहला एटी कोन लिखा है वन ऑफ रो रूल कोन वन ऑफ परे नाउन टा प्लुरल आसीबो तेनु वन ऑफ द बिगेस्ट ऑयल इंपोर्टर्स ठीक तापर एट लिखा कोन बट रा होजे कोन ना गोटे प्रीपोजिशन हे पारे कंजंक्शन हे पारे जेमति कि एवरीबॉडी पास्ट बट मी एटी बट टा कोन हे गला ना गोटे प्रीपोजिशन हे गला बट मो कहबी आई लाइक इंग्लिश बट ही डज नॉट लाइक मैथमेटिक्स एटी बट टा कोन हे गला गोटे कंजंक्शन हे गला सो रूल कोन मन रखिबा कंजंक्शन अछि माने बट परे सब्जेक्ट वर्ब रहइबो इंटरोगेटिव थिले हेल्पिंग वर्ब आगो आछो जेमति कि बट इज इट ए गुड आइडिया एमते कहो ना नहीं तो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट तो सिम्पली एटी कोन लिखा है इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट ऑयल इंपोर्टर्स बट इन दिस प्रैक्टिस नहीं एट लिखा हो इज दिस प्रैक्टिस कहीं प्रैक्टिस हम ना गोटे प्रैक्टिस होची ऑयल इंपोर्ट करिया विषय कहि तो लिखिया कोन इज दिस प्रैक्टिस एस लगे एटा भूल गला गुड फॉर द कंट्री एंड इट्स पीपल भलो कि इट इज आस्किंग ए क्वेश्चन हियर गेटिंग इट फॉर्मेट रखो एठी सो डू मेंशन राइट इन योर कमेंट्स इफ देयर इज एनी फर्दर क्लैरिफिकेशन दैट यू नीड मोर देन हैप्पी टू प्रोवाइड ओके सो नाउ let us go to the next question this is question 5 then again you see it subject kon hochi the internet project this is subject singular rahila verb singular rahega eти verb kon achi envisages envisages ro singular word mean kon vision mane kon gote concept vision ro verb word hochi visualize or envisage mane think or imagine kare एटी एस लगे माने एटा कोन हबो सिंगुलर हे गला ना तो एटा देखो प्रोजेक्ट नाउन टा सिंगुलर वर्ब सिंगुलर एटी एरर नहीं द इंटरनेट प्रोजेक्ट एनविजेस व्हाट ऑब्जेक्ट कोन ना द यूज ऑफ हाई अल्टीट्यूड बैलून्स एटी कोन আছে 2 + v1 हबो ना नहीं तेन 2 प्रोवाइडिंग को काटी काम कोन करिया ना 2 प्रोवाइड कोन प्रोवाइड करिया ना टू प्रोवाइड अफोर्डेबल इंटरनेट टू अराउंड 5 बिलियन पीपल ग्लोबली who currently have no access point is clear एमती बुझा पड़ो गॉट इट नाउ आई विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एटी कोन लिखा है एट लिखा है each question has 2 blanks each blank indicating something has been omitted so that means fill in the blanks अछि ना चलो रूल देखिबा लिखा है a new study has पर एटी v3 फॉर्म आसीबा verb रना नहीं 5 most common health issues in man and how to solve them and how to पर v1 रहइबो so this is the structure rule तो हाउ टू हैज पर v3 फॉर्म अछि हले v3 फॉर्मूला आंसर एटी कोन हबो सबतक तो अछि बट गोटे स्टडी कोन करिवो ना गोटे फैक्ट को लोकालोचन को आनिबो रिवील करिवो तनु स्टेटेड तो हबनी एटी आंसर रिवील्ड हैज रिवील्ड 5 मोस्ट कॉमन हेल्थ इश्यूज एंड हाउ टू प्रिवेंट देम कन हेल्थ इश्यू माने कोन एटा गोटे प्रॉब्लम को हम केन सॉल्व करिया प्रिवेंट सेंस रे वर्ड असला त आंसर एटी कोन हबो ऑप्शन सी क्लियर always remember it then hame jiba question next ko dash to the challenge of fighting drug addiction children have dash the task of spreading awareness तो एडी वर्ड कोन छी एडी हैव पर एडी कोन हबो एडी v3 फॉर्म आसीबो राइट तापर dash to the challenge एडी वर्ड कोन लिखा है गोटे चैलेंज को हमें कोन करिया सब बोले हमें आइदर रेस्पोंड करिवा ना नहीं तेनु एडी रेस्पोंडिंग टू द चैलेंज ऑफ सर आप रेस्पोंडिंग कहीं कले रेस्पोंड कहीं कले डिफरेंस होची रेस्पोंड इज ए वर्ब और रेस्पोंडिंग टा होची वर्ब रो आईएनजी फॉर्म बेले बेले कोन हबो आमे ओटे मॉडिफायर ऊपर यूज होचु जेंदि आमे कहि परिबा वॉकिंग इन द पार्क आई सॉ ए टाइगर एडी वॉकिंग टा का रिफर कला आई को सिमिति एडी लेखा हबो रेस्पोंडिंग टू द चैलेंज तो हु इज रेस्पोंडिंग आंसर हबो चिल्ड्रन ए सेंस रास्ते वरो मु रेस्पोंडिंग वर्ड को चूज कली देन अगेन एटा देखिबो v3 फॉर्म अछि माने टेकन अछि तो कोन होची ओवरऑल मीनिंग टा ना चैलेंज ऑफ फाइटिंग ड्रग एडिक्शन आको रेस्पोंड करी कि चिल्ड्रन हैव टेकन अप द टास्क माने चिल्ड्रन माने बतन रेस्पोंसिबिलिटी नै चंती टू स्प्रेड अवेयरनेस अगेंस्ट ड्रग तो आंसर एटी कोन हबो सी हे जिवो इज द पॉइंट क्लियर बुझो नेक्स्ट गिव मी अ सेकंड स्लाइड नंबर 10 the night fabric can do dash for your frame and as a dash your confidence तो एटी पॉइंट कोन अछि ना मन रखिथिबो एटी नाइट फैब्रिक रो रिलेशन टा म देखिया पड़िबो आम फ्रेम पई एंड कॉन्फिडेंस पई एटी फ्रेम रो मीनिंग कोन बुझिबो हमर फिजिक और हमर बॉडी विषय रे कहला एंड इफ आई हैव ए गुड बॉडी
आई फिल कॉन्फिडेंट इन माय स्किन हाँ ना नहीं तो यहाँ कौन ना गोटे लुक्स फैब्रिक एंड कॉन्फिडेंस ये तीन टाक रिलेट करके आम आंसरटा देखा पड़ो तो ये कौन करवा जदि फैब्रिकटा भल कर माने कॉन्फिडेंस उपर भल इफेक्ट पड़ो जदि डैमेज कर माने कौन हम कॉन्फिडेंसटा डैमेज हो एमती लिखाई ना नहीं तो मीनिंग कौन लिखाई देख फर्स्ट वर्डटा द नाइट फैब्रिक कैन डू वंडर्स माने भल कर मैजिक एंड एज ए कॉन्सिक्वेंस योर कॉन्फिडेंस एमती हम कि हाँ हम केमी नाइट लिखा फॉर अच्छी माने वंडर्स कहाँ कर मो फ्रेम कर मो कॉन्फिडेंस कर तेणु फॉर वाटर रहा तेणु आंसर ये ए को करवा यहाँ को ऑप्शन देखी चूज करिए ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा ये लिखा देख द व्हीट ग्रेन्स डू नॉट मीट द डैश स्टैंडर्ड्स एडजेक्टिव आसीबो डैश फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स बाय द गवर्नमेंट एजेंसीज माने कौन अच्छे फूड ग्रेन ऑर्डर के प्लेस कर गवर्नमेंट एजेंसी हेले व्हीट ग्रेन रो स्टैंडर्डटा नाही नाही कारण डू नॉट मीट लिखाई ना नहीं तो आंसर कौन कर फूड ग्रेन रो स्टैंडर्ड नहीं माने कौन स्टैंडर्ड वाटा क्वालिटी को रिफर करियो तो आंसर ये कौन कर आम ये क्वालिटी को देखिपर हो कि मीनिंगटा देख ओवरऑल लिखा जे द व्हीट ग्रेन डू नॉट मीट द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स तब कौन लिखा प्रेस्क्राइब्ड फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स बाय द गवर्नमेंट एजेंसीज क्लियर नो then आंसर रेडी ए को चूज करिए ओवर नेक्स्ट लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 12 हियर इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज शेयर ओके सो नाउ एटी देखो एटी क्वेश्चन लिखा है स्टूडेंट्स विल बी डैश ऑन देयर रीडिंग एंड राइटिंग एबिलिटीज दो क्वेश्चन पेपर्स डैश बाय द गवर्नमेंट अच्छा विल बी मॉडल वर्ब बी माने कौन हम V3 फॉर्म आसे पासिव रे तो स्टूडेंट्स माने को क्वेश्चन पेपर कौन करियो टेस्ट करिवो ना नहीं जज्ड हो पार केप्ट तो हेनी कैलकुलेटेड तो हेनी कैलकुलेट तो स्टूडेंट कौन करिया स्टूडेंट्स मान आइदर आम जज करवा टेस्ट करवा कि इभालुएट करवा तीन टा जाकर गोटे कोरिलेसन रोचे फर्स्ट वर्ड तीन टा जाक जहाँ भी लिखले हो पार आगू को देखा कौन लिखाई स्टूडेंट्स विल बी टेस्टेड ऑन देयर रीडिंग एंड राइटिंग एबिलिटीज थ्रू क्वेश्चन पेपर डैश बाय द गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइडेड हो आस्क तो हेनी आसर्टेड तो हेनी आसेम्बल्ड सेंस रे आसीबो आंसर कौन करिवो प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट दैट मीन आंसर विल बी सी क्लियर एमती बुझ वर्तमान आम जा नेक्स्ट को यहाँ कौन रखाई यहाँ गोटे क्लोज टेस्ट अच्छे तो क्लोज टेस्ट आंसर जा देखा टे तो फास्ट लिखाई देख ये पढ़ीदेवा टे से लिखाई कौन विजुअल एक्सपीरियंस कैन डैश चिल्ड्रेन कैन पर मॉडल वर्ब सो ये आम गोटे V1 फॉर्म देखु तो व्हाट आर द ऑप्शंस गिवन चल आम ऑप्शंस को देखा टे ये ऑप्शंस कौटी अच्छी 1 सेकेंड कैन पर V1 फॉर्म आसो तो आंसर ये कौन कर एडिंग तो हेनी प्रेस्क्राइब तो हेनी आंसर करा कौन हेल्प स्टूडेंट्स करवा तो 11 नंबर आंसर कौन हम हेल्प हम तो आंसर कौन दूचे ना विजुअल एक्सपीरियंस कैन हेल्प चिल्ड्रेन टीनेजर एंड एडल्ट्स लर्न एंड एब्जर्व मोर ड्यू टू इट्स हाईली स्टिमुलेटिंग एंड डैश एंगेजिंग इम्पैक्ट 2 नंबर ऑप्शन को जीवा 2 नंबर ऑप्शन कौन है डीपली हम सर आपन केमी डीपली कहीदे आम तो जानीपारूनी जानवर जिनस यहीटा जे देख हाईली विजुअल ये पैटर्न देख एंड अच्छे ना हाईली विजुअल एक्सपीरियंस कौन बुझे हाईलीटा एडवर्बटा विजुअलटा एडजेक्टिवटा एक्सपीरियंसटा नाउन ओके तो सेमती लिखा देख सर ये कौन लिखाई हाईली स्टिमुलेटिंग देखाई ना यहाँ देख तो हाईलीटा हूँ कौन एडजेक्टिवटा एंड स्टिमुलेटिंगटा कौन हो तुम गोटे हाईलीटा एडवर्बटा स्टिमुलेटिंगटा कौन गोटे एडजेक्टिवटा ताहले ये एंड पर सेम लॉजिक आसो ना नहीं ये एंगेजिंगटा हूँ कौन गोटे एडजेक्टिवटा ता पूर्व कौन हम गोटे एडवर्ब आसो एल बाय वर्ड अच्छे डीपली सो इट इज एन एडवर्ब पॉइंट क्लियर हो गला तेणु डीपली एंगेजिंग इम्पैक्ट क्लियर तापर कौन हो इट इज फॉर दिस रीजन दैट वी आर सीइंग एन इंक्रीज इन स्कूल्स एंड अक्रॉस द ग्लोब डैश कंटेंट प्रोवाइडर प्रोग्राम कौन अच्छे आंसर देखा 3 नंबर आंसर कर इनकॉर्पोरेटिंग मीनिंग है इनक्लूड करुचंती अच्छा प्रेसिंग तो जानिच फॉलोइंग पार्टिंग मान लिविंग
इनकॉर्पोरेटिंग रे मीनिंग होची कोन इंक्लूड करबा नाउ वी शैल ट्राई टू जस्टिफाई एटी आंसर ता हमें इनकॉर्पोरेटिंग कोन पे करिया सिंपल रीजन यू सी इट इज कहै कोन इट इज फॉर दिस रीजन माने हमें रिलेट कले कोन विजुअल एक्सपीरियंस द्वारा चिल्ड्रन मानकर हेल्प होची पॉजिटिव जिनस होची ता माने हम कोन करे लोक माने पॉजिटिव जिनस हबारु टेक्नोलॉजी को कोन करिवे इंक्लूड करिवे ना नहीं हां ना नहीं इंक्लूड करिवे ना इंक्लूड करिया पे लिखा है कोन एठी इट इज फॉर दिस रीजन दैट कौन लिखा है वी आर सीइंग एन इंक्रीज इन स्कूल अक्रॉस द ग्लोब इनकॉर्पोरेटिंग कंटेंट प्रोवाइडर प्रोग्राम इनटू देयर क्लास करिकुलम एतिके ब्रेक नंबर तनु जेहेतु विजुअल एक्सपीरियंस तारे पिलान को लर्निंग रे कोन ओडे बूस्ट अप मिलुची आमे देखु जे अराउंड द ग्लोब लोक ने कोन करचंदी ना कंटेंट प्रोवाइडर प्रोग्राम माने विजुअल टेक्नोलॉजी यूज करी पिलान को पाठ पढाउचंदी अच्छा काहेंगे टू डैश लेसन्स थ्रू वीडियो माने कोन वीडियो थ्रू रु लेसन देबे एटा बुझियो पड़ियो वीडियो थ्रू रु लेसन देबे माने आंसर एटे कोन आस परिबो तो इम्पार्ट पॉइंट क्लियर हे गला ना इम्पार्ट माने कोन गिव तेन आंसर एटे आबो सो दिस इज दैट कांसेप्ट गिव मी अ सेकंड देन अगेन जिबा ओके visual excursions and school collaborations are dashed by advances in high definition video, high fidelity as audio, and content sharing, allowing students to experience a richer and more stimulating learning experience. So let us look fifth option पे कौन options that are available for us. तो ये कौन हबो देखो ये what है dissolve, enhanced, measure, fail and blasted. आमे नेगेटिव वर्ड तीनटा जाव काटी देबा बिकॉज़ सेंटेंस रो सेंस टा टोटली पॉजिटिव अछि दैट मींस ए डी एंड ई आर कौन एटी आंसर कौन हबो एनहांस्ड हे परिबो किंबा सी मेजर्ड हे परिबो यस और नो चल ए विषय कांसेप्ट देखिबा व्हिच फिट्स तो तेन मास कोन कहै छै हां देखिबा एठी विजुअल एक्सपीरियंस एंड स्कूल कोलैबोरेशन आर डैश बाय माने विजुअल एक्सपीरियंस आ स्कूल कोलैबोरेशन का कोन होचंदी एनहांस होची माने कोन क्वालिटी टा बढ़ी होची कना हम टेक्नोलॉजी को इंक्लूड करछु तेने कर एनहांस्ड बाय एडवांसेस इन हाई डेफिनेशन वीडियो हाई फिडेलिटी एज ऑडियो एंड कंटेंट शेयरिंग अलाउइंग स्टूडेंट टू एक्सपीरियंस ए रिचर एंड मोर स्टिमुलेटिंग लर्निंग एक्सपीरियंस सब मन रखते पिले ए आंसर देख सब तुम ऑप्शन टा कौन हम ना कौन कर ना तुम कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट द्वारा जस्टिफाई हम पॉजिटिव सेंस तीन टा काटिदेली सर आप मेजर्ड एंड एनहांस्ड कहीं हेलेनी एनहांस्ड मीनिंग कौन हो क्वालिटी टा बेटर होची ना क्वालिटी बेटर होची हम कौन बुझिया पॉजिटिव डिग्री रो कंपैरेटिव डिग्री के जाउची तो देखो एटी वर्ड लिखा है रिच नहीं रिचर रिचर माने कौन हेतियो क्वालिटी टा बढ़ी थिबो ना नहीं बढ़ी थिबो माने आंसर कौन हैला एनहांस्ड हैला तमे मो मन भाबुची कहि कि तमे मार देबो मेजर्ड आंसर टा भूल हे जिवो गेटिंग इट रीडिंग मीन्स रीडिंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पैसेज से कौन जिनसटा कहबो चेष्टा करछि गेटिंग इट ना एनी डाउट यू हैव यू कैन आस्क क्लियर देन हम आगु को देखिबा ओके schools that have previously transported students to excursion in dash now face increased transportation cost higher insurance premium attendance cost for the families and strict duty of care policy of student while dash school properties तो ये कौन हो ना स्कूल मैंने प्रीवियसली को एवर स्टेट रे कंपेयर कर आग पिला मानक लर्निंग कौन करा जाए गोटे स्टडी टूर रे हमें पठे जाऊँ तो से सेंस से कहूँ तो ये आंसर कौन करवा 6 नंबर इज गिवन नो लेट अस सी व्हाट आर द ऑप्शंस गिवन ये कौन हम इन डीड तो हेनी ये आंसर हम इन लिव ना इन पर्सन हो पारे इन पर्सन माने कौन फिजिकली जापर क्या आंसर हो पारे कौन इन लिव माने इन एक्सचेंज सेंस रे बेटर ऑप्शन हम तो आंसर ये ई कर इन लिव करवा ओके in lieu now face increased transportation cost okay visual excursions dash student na kon likha ji okay strict policies while dash school property so it is next option ta kon अछि एठी देखिबा हमें while एटा आंसर हम कोन चूज करि परिबा इन्वॉल्विंग हबो कि सेविंग स्कूल प्रॉपर्टी हबार चांस नाही अवे मध्य हेनी ये आंसर कौन हम ऑफ स्कूल प्रॉपर्टी हो पार डी कर माने स्कूल प्रॉपर्टी रू तुम बाहर को जाओ एक्सकर्सन दैट इज द रीजन हियर ओके नेक्स्ट को जीवा 21 तापर कौन देछि लेट अस सी
visual excursions dash a student to improve their presentation, research, learning and speaking skill while they engage in a live learning session. माने visual excursion virtual excursion जाक स्टूडेंट मान को कौन करे, we need a verb here. So let us look at the options. एटी कौन देखे जे enable हबो हम तांको गोटे कौन फैसिलिटी प्रोवाइड करे तो आंसर एटी बी करबा enable करेबा. गेटिंग इट एंती बुझा. नेक्स्ट को आमे जिबा students also now have the ability to meet peers. Peer माने कोन तांको senior from many culture, speak to subject matter dash like scientist. Scientist like कोन think or behave work ए concept रस परियो ना नहीं. तो ए सेंटेंस ता कोन कहूची ना virtual excursion द्वारा स्टूडेंट मानकर केमती डेवलपमेंट होची. So we need a verb here. So let us see what is the option लिखाई छी. एटी कोन हबो and एटी आंसर देजे कोन क्लॉज डिक्शनरी. एटी साइंटिस्ट देचे ना तो आंसर हमें एक्सपर्ट को करबा कारण सब्जेक्ट नॉलेज को रिफर वर्ड करबो. ओके experts like scientists or practice a foreign language with students from another country and learn about global issues from the dash of their own classroom. माने निज क्लासरूम रे बसे कि ग्लोबल इश्यू विषय जानि परिबे. तो एठी आंसर में कोन करि परिबा. लुक एट द ऑप्शंस गिवन फ्रॉम द एठी आंसर करबो कोन सेफ्टी ऑफ देयर ओन क्लासरूम. कारण क्लासरूम रे बसे कि दुनिया देखिले तो आंसर एठी कोन करबो सी को चूज करबो. आई होप ऑल ऑफ यू हैव गॉट इट. तो ए क्वेश्चन ता सरला. नेक्स्ट टाइम जिबा एटी लिखा है 21 25 लिखा है जे ये 6टा सेंटेंस को हम रीअरेंजमेंट करबा. चलो 6टा सेंटेंस पढ़ी के हम देखिबा स्ट्रक्चर कोन होची कोन नै. तो फर्स्ट कहै छै बट द कन्वेंशनल विजडम इज रॉन्ग. जतले बट असला एटा के ओपनिंग सेंटेंस हे परिबानी. बी टा कहै छै द assumption is that planting trees and avoiding further deforestation provides a convenient carbon capture and storage facility on the land. The problem is एटा assumption वाटा दे जी एटा कहार assumption हम जानि न. so this cannot be an opening sentence. Then तीन सेंटेंस कौन दे जी considering all the interaction large scale increases in forest cover can actually make global warming worse. तो एटा कौन बुझिया पिले हम बुझिवा जे this is a conclusion and a sentence never begins with a conclusion. तो एटा conclusion तो आसीबनी. What's the main idea? main idea पे हमें देखिबा जे ऑप्शन डी ई एंड एफ ए तीनटा जिंस अछि ना. यदि ई को देखिबो दैट इज द कन्वेंशनल एटी दैट टा का रिफर को हम जानिनो. इन रियलिटी टा तो ओपनिंग टा आसीबनी. आंसर केवल डी टा हबो ओपनिंग. कौन लिखा है डिफॉरेस्टेशन अकाउंट्स फॉर 20% ऑफ द ग्लोबल एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो डी टा हबो ओपनिंग. क्लियर. तो लिखि दो मो डी पर कोन हबो देखो जे तबरे deforestation accounts for 20% of global emission. तापर हम करिया the assumption is that planting trees and avoiding further deforestation provides a convenient carbon capture and storage facility. D परे B आसीबो. What is the connection? एठी मध्ये word deforestation रे देछि ना नै. ता माने याकू नै किरे assumption करा हेछि. ता माने D बे जानि परला ना नै. क्लियर हे गला ना. एमते बुझिबो. तो D बे पर कोन हेछि but the conventional that is the conventional wisdom. E आसीबो that टा माने कोन एटा को B को देखेला तो ना D B E आसीबो. पॉइंट क्लियर. तापर कन्वेंशनल विजडम वर्ड टा रिलेट हेछि कोडी ए रे ताको कॉन्ट्राडिक्ट करछि. बट द कन्वेंशनल विजडम इज रॉन्ग. तेनो D B E A. इज इट क्लियर. फल से बुझियला ना नै एमते बुझिबो D B E A. बट द कन्वेंशनल विजडम इज रॉन्ग. व्हाई इट इज रॉन्ग. रॉन्ग एथिले कि जे से कहि जे in reality the cycling of carbon energy and water between the land and atmosphere is much more complex. एटा बहुत कॉम्प्लेक्स अछि. कोन द साइक्लिंग ऑफ कार्बन एनर्जी एंड वाटर. तो ए सेंटेंस टा कोन कन्वेंशनलिज्म को कॉन्ट्राडिक्ट करछि. तेनो एटा एफ लिखले तेनो 8 होने के हम एक्चुअल कंक्लूजन रे कोन पहुंचीबा. तर कंसीडरिंग ऑल द इंटरैक्शंस बुझि पाले ना नै. large scale increase in forest cover can actually make global warming worse. सीटा हम conclusion हो. Got it? Logically पढ़िबा ऑप्शन देखि के मॉडिफाई करियो. ओके. ए क्वेश्चन को हमें सॉल्व कर देलु. इट्स ओके. प्रॉब्लम नहीं हमको. हम आगो को जिबा कोन अछि
Okay, now this is phase improvement. चलो देखिए some countries that missing एटी कौन एरर अच्छी ना some countries टा है नाउन नाउन पर that आसला माने एटा गोटे रिलेटिव क्लॉज आसबो रिलेटिव क्लॉज जतरा that आछी मु कहि परि I have the book that was given to me ए फॉर्मेट that पर कौन होची ना डायरेक्ट वर्ब आछी किंबा I have the book that the king gave to me एटी that पर कौन आछी सब्जेक्ट वर्ब आछी गेटिंग इट तो ये दैट पर डायरेक्ट आईएनजी फॉर्म तो आसबनी सो दैट इज एरर तो आम कौन करा ना सम कंट्रीज व्हिच मिस्ड आउट ऑन आंसर हम सी कौन द फर्स्ट ग्रीन रिवोल्यूशन ड्यू टू पुअर पॉलिसीज एठू भर्बटा स्टार्ट होचे आर नाउ विटनेसिंग ए चेंज तो ये जब प्रश्न पचारि हु और व्हाट आर नाउ विटनेसिंग ए चेंज तो आंसर हम सम कंट्रीज को कंट्रीज जो माने कि मिस्ड आउट ऑन फर्स्ट ग्रीन रिवोल्यूशन 1 + 1 2 यू आर मेकिंग दैट कनेक्शन ना एमती बुझियार अछि तुमको क्लियर सो यार आंसर हम कोन करबा सी करबा देन हम आगो बुझिबा वन मोमेंट हियर तो इट्स सिम लिखा है ऑनलाइन शॉपिंग इज प्रोजेक्टेड टू इंक्रीज बाय 350% ड्यूरिंग पीक फेस्टिवल सीजन ठीक अछि ऑनलाइन शॉपिंग सब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड पासिव रे अछि प्रोजेक्टेड पर 2 लागिबो टू कौन टू इंक्रीज केते ना बाय 350% एते ठीक अछि केबे ड्यूरिंग पीक फेस्टिवल सीजन्स ऑन अकाउंट ऑफ मीनिंग अछि कौन रीजन कौन द अनबिलीवेबली लो प्राइसेस तो एडी कौन होछि ना देखो अनबिलीवेबली टा एडवर्ब लो टा एडजेक्टिव प्राइस टा नाउन ऑफर्ड बाय द रिटेलर्स नो एरर हबो निजे ठीक अछि आंसर टा नो चेंज रिक्वायर्ड करी एनी क्वेश्चन एनी डाउट यू हैव प्लीज शेयर विथ मी Similarly, एठी देखिबा कोन लिखबो Asian firms need to spend 50% more than the research and development and dash coming with breakthrough innovations to be competitive. What is the error here? Let us understand the structure. Structure कोन देस देखिलो Asian firms वाला company they need काई लागला प्लूरल अछि देखो need कोन दरकार ना दीटा काम करिया पड़िबो गोटे होजी to spend कौन spend करेंगे 50% more than the research and development and 82 plus v1 वाले 80 मध्य v1 आसीबो हना नै I want to sing and dance कहूछु and dancing तो हबनी getting it तो तेनु क्रिएट कोन करबो and come up with answer हबो d breakthrough innovations to be competitive is the point clear एमती तुम बुझाओ पड़ी then I'll go to the next one एटी कोन लिखा है an audit of private electricity distribution companies subject रहला will be undertaken करा जिवो passive रे before the central government before the conjunction आला एडे रूल आसला कोन the central government announces to hike पर 2 plus v1 हबो तबरे कोन हबो तबरे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आसीबो हाइक अप तो हुएनी आंसर कोन करे to hike traffic that means option a hike traffic up okay that's it तो ऑप्शन एडी ए आसीबो getting it clearly भल से बुझा तापर जेबा एठी की 26 रो 30 sustain level growth required to lift millions of people out of poverty will require rethinking of a country's economic policy देखो एठी verb टा होचे कोन ना will require rethinking of a country's economic policy एठी गाटा पकेली एठी भाबी what will require माने टोटल वर्ड टा सब्जेक्ट हबो सब्जेक्ट वर्ड रे जो सस्टेन वर्ड लिखा है सेटा होची वर्ब ताको हम नाउन फॉर्म रे यूज करले कोन हबो सस्टेनिंग टू सस्टेन माने सस्टेनेंस ए तीनटा भीतर हम चेक करिया पड़िबो तेनो टू सस्टेन लेवल ऑफ ग्रोथ ने टू सस्टेन द लेवल ऑफ ग्रोथ एमते लिखियाटा बेटर हबो तेन एटा कटि गला आमे जेन कहलु आईएनजी फॉर्म आसी परिबो जेन कि वॉकिंग इन द जंगल ही सॉ अ टाइगर सेमथि कोन लिखिबा सस्टेनिंग द लेवल ऑफ ग्रोथ रिक्वायर्ड टू लिफ्ट मिलियन ऑफ पीपल एटा करेक्ट लागो जे सीडा काई भूल हे गला सस्टेनेबल लेवल्स नै हम गोटे नाउन टे दरकार इफ माने एटी कंडीशन रो कांसेप्ट ही नै त आंसर टी कोन करिवो ओनली बी टा को चूज करिवो क्लियर अंडरस्टैंड इट क्लियरली तापर जे नेक्स्ट को 31 and 32 the content of this passage dash to the Mughal period it relates को के रेफर करि परियो a content of the passage ता is about the Mughal period in the meaning of about माने को वर्ड आसी परियो happens हे परियो ने
अच्छा seems shows depicts depicted है परिबो yes it is correct but there is a problem depict पाखरे 2 लागिबो कि तेनु करे आंसर टा भूल हे गला shows पर 2 लागिबो कि नाइ seems पर हबो कि आंसर हबो केवल e pertains to ର meaning हला related to clear एमते बुझो तापर हम नेक्स्ट को जीवा से लिखा है निमास हस्बैंड डैश हर टू गिव अप द जॉब बाहर करया पे तक बाध्य कले कि सेंस टा टिके नेगेटिव हे जाउची त आंसर एटे कोन हबो फोर्स्ड कंपेल्ड माने देयर इज ए स्ट्रांग रीजन मोरल सेंस रे से फोर्स्ड माने कोन तो कथाटा को जणे तते ये कला तेनु से आंसर एटे कोन करबू फोर्स्ड करबू कारण एटा गोटे कोन इट इज क्लियर फ्रॉम द मीनिंग दैट निमार इच्छा नथिला त हस्बैंड तको बाध्य कला करिया पे बाध्य कला माने कोन हस्बैंड जोटा कला से एक्शन को हमें प्रायोरिटी देबा तेन आंसर कोन बेटी फोर्स अ कंपेल्ड और फोर्स द डिफरेंस कोन हले डिफरेंस जानि परछ ना मु जतर कहबी आई वाज कंपेल्ड बाय माय हस्बैंड एमती कहले कोन हबो मते बाध्य करा गला दैट इज द लॉजिक ताले मो हस्बैंड मते कोन करथिबो फोर्स करथिबो तो मीनिंग कोन होची मो हस्बैंड फोर्स करारो मु एटा करिया पे कंपेल्ड हेली गेटिंग इट प्लीज लर्न टू एनालाइज इट इन दिस मैनर तेनु एटी दीटा तक आंसर करेक्ट हेले मध्ये हमें प्रायोरिटी देबा बी को फोर्स्ड क्लियर नेक्स्ट देखिबा 37 क्वेश्चन अच्छा 33 रु 42 दिस इज अबाउट अ पैसेज चलो टिके पैसेज पढिबा देखिबा कोन अछि कोन नै पैसेज रे तो लिखा छै कोन देखो इन जनरल बिफोर द फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2008 आमे ओटा फाइनेंशियल क्राइसिस विषय रे कहू द फाइनेंशियल सेक्टर द वर्ल्ड ओवर माने ऑल ओवर द वर्ल्ड रे द फाइनेंशियल सेक्टर विषय रे म कहू छु had been steadily liberalizing माने ए सेंटेंस जदि पढिबी तार मीनिंग होछि कोन आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फाइनेंस और द कंडीशन ऑफ वर्ल्ड फाइनेंस बिफोर द फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2008 व्हाट टा पॉजिटिव थिला कारण सब तक लिबरलाइज होतला सो इट वाज द एरा ऑफ लिबरलाइजेशन हम एमते कहि परिया तापर कोन लिखाइ छी ना देखो नेक्स्ट लाइन को फॉलो करो लिमिट्स on foreign ownership of bank and at the kind of transactions they were able to engage were being lifted माने एटा कोन लिबरलाइजेशन रो इन्फ्लुएंस को बताउची ना लिबरलाइजेशन थिबारु कोन हला ना हमर ट्रांजैक्शन ऊपर एंड ओनरशिप फॉरेन ओनरशिप ऑफ बैंक ऊपर कोन हला रेस्ट्रिक्शन जाको रिलैक्स करा जाउथिला तापर कोन कहूची रिच कंट्रीज वेर डीरेगुलेटिंग फास्टर देन अदर्स रिच कंट्रीज माने डीरेगुलेट हला डीरेगुलेटर मीनिंग कोन रेगुलेशन को हम रिलैक्स कर दोछु व्हिच मींस लिबरलाइजेशन लिबरल रो मीनिंग कोन जटिल को सरल कर दवा गेटिंग इट एम्ति बैंक्स वर गिवन ग्रेटर लीवे पिले मार्क करो लीवे रो मीनिंग हला रिलैक्सेशन और फ्रीडम तो बैंक्स वर गिवन ग्रेटर लीवे ऑन हाउ मच कैपिटल दे शुड होल्ड एंड हाउ मच रिस्क दे शुड टेक ऑन तो एटा कोन कहउथला ना बिफोर द फाइनेंशियल क्राइसिस लिबरलाइजेशन रे बैंकिंग सेक्टर ऑफ परिस्थिति कोन थिला हाउ थिंग्स वर डन इन द फाइनेंशियल सेक्टर बिफोर दैट क्राइसिस एति से बताइला बट एटी देखो कोन लिखै छै बट banks the world over did not maintain adequate capital cushions and balance sheet okay showed inflated profit माने ये जो लिबरेशन हैला ए लिबरेशन द्वारा गोटे नेगेटिव इफेक्ट कोन हैला ना लिबरेशन द्वारा कोन हैला ना बैंक्स माने कोन हैले ना मेंटेन कलेनी एडिक्वेट कैपिटल कशन माने कोन जेटा प्रोटेक्शन दिए फंड दिए अगेंस्ट रिस्क एंड इमरजेंसी तो कहले दे लिबरेशन ना रे जते सब यार सेटे काम करथले ता द्वारा कोन हैला बैंक्स फेल्ड टू माने कोन टेक सम स्टेप्स फॉर प्रोटेक्शन एंड बैलेंस शीट गुडा को इन्फ्लेटेड प्रॉफिट देखेला इन्फ्लेटेड प्रॉफिट माने 10 टका प्रॉफिट तो से तको कोन 60 टका प्रॉफिट लेगे के उछल के देखेला एमते करे तर कोन रियल फैक्ट एटा कंफ्यूजन हबो ई जिंसरा बुझिया पड़िबो तब लिखाइ छी एज एन एग्जांपल इन 1999 से कोन कहै छी अमेरिका आल्सो रिपील्ड द डी ग्लास स्टीगल एक्ट ए 1930s डिप्रेशन एरा लॉ सेपरेटिंग इन्वेस्टमेंट एंड कमर्शियल बैंकिंग विदाउट बॉदरिंग अबाउट द थ्रेट टू द इकोनॉमी तो जेहेतु एक्सेस लिबरलाइजेशन थिला लोक बैंक्स लोक माने कोन कले ना टिके कैजुअल हे गेले से माने कोन कले इन अमेरिका रे 1999 कोन हला ना गोटे डी ग्लास स्टीगल एक्ट थिला केबे हितला 1930 रे थिला गोटे ग्रेट डिप्रेशन थिला दैट वाज आल्सो ए पीरियड ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस तो से क्राइसिस और से माने बुद्धि सिखी के भाभी देले जे कोन करिया ना ए जिंस रो हम लॉ टा आनीबा बट 1990 रे ड्यू टू ओवर कॉन्फिडेंस ऑफ लिबरलाइजेशन अमेरिका को कला ए लॉ टा को भांगी देला
आ भांगीदेला जो सी आ बुझीपारे जे या द्वारा अमेरिकन फाइनेंशियल सिस्टम वर्तमान रिस्क रे पड़े आसला तेणुक ये लिखाई कौन रिपेल्ड विदाउट बदरिंग अबाउट द थ्रेट टू द इकोनॉमी सैला तो ये बर्तमान कौन है थ्रेट कौन कौन हो तार सिचुएसन जाक से वर्णना करके पढ़ा तो लिखाई कौन रेस्ट्रिक्शंस आर ए साइन ऑफ ये आर लिखाई से आर आर ए साइन ऑफ बैकवर्डनेस बट द रिजल्टिंग क्राइसिस ऑफ 2008 पुट एन एंड टू दिस बिलीफ तो यहाँ से कहला अमेरिकन लोक पचारा से तो डिप्रेशन प्रोटेक्शन लटा रेस्ट्रिक्शन करथिला तमे तो कहीं काटिल ना से कहले आम गोटे जिन रेस्ट्रिक्ट करूँ मैंने आगे बढ़ी पारे रेस्ट्रिक्शन इज द साइन ऑफ नेगेटिव प्रोग्रेस यहाँ जस्टिफाई काटिदेले काटि सीना देले बट तापर जो 2008 जो क्राइसिसटा है से विश्वासटा टोटाल भाव में डिप्रेस होगा पुट एंड एंड टू दिस बिलीफ सो जो दिस बिलीफ लिखाई दिस बिलीफ मीनिंग है दे बिलीव दैट रेस्ट्रिक्शंस आर ए साइन ऑफ बैकवर्डनेस रॉन्ग कॉन्सेप्ट रेस्ट्रिक्शन इज ए साइन ऑफ प्रोटेक्शन एटा ऑथर कह चेष्टा कर अंडरस्टूड भल से बुझा पिले तापर कौन कही अंडर द ओल्ड रूल्स अनुसार कौन है सुपरवाइजर्स मान के फाइनेंशियल मार्केट सुपरवाइजर्स से कौन करते वेर सिंपली रेफरीज ट्राइंग टू एनश्योर दैट द गेम वाज प्लेड फेयरली ओल्ड रूल अनुसार कौन रेफरी मैंने गेम टाक बैंकिंग ट्रांजैक्शन टाक सिस्टमेटिकली मॉनिटर करते बट नाउ वर्तमान रेगुलेटर माने कि फाइनेंशियल रेगुलेटर हैव गॉन फ्रॉम सेइंग टेल मी दैट ऑल योर पेमेंट सिस्टम्स वर्क टू सेइंग शो मी हाउ योर पेमेंट सिस्टम वर्क मैंने एबे कौन है फाइनेंशियल रेगुलेटर मान को एते फ्रीडम दिगला जे से मैनिपुलेट कर मार्केट को यहाँ से कह चेष्टा कर रेगुलेटर्स आर नाउ स्टेपिंग ओवर ए लॉन्ग स्टैंडिंग डिवाइड बिटवीन एनफोर्सिंग बेसिक रूल एंड प्लेइंग ए पार्ट इन बिजनेस डिसीजन माने रेगुलेटर मानकर काम था रेफरी हबार एबे से निजे रेफरी है कि निजे प्लेयर रूप में आसिक मार्केट को मैनिपुलेट कर द्वारा मार्केट रे कौन हम इम्बालांस हो अनस्ट्रक्चर्ड हो क्राइसिस आसो जापार यहाँ से कह चेष्टा कर रेगुलेटर्स अच्छा दिस शिफ्ट इज पार्टिकुलरली मार्क्ड इन ब्रिटेन माने यही भाया जिनस आम कौ इकोनॉमी देखा पाचु ना ब्रिटिश इकोनॉमी जाऊँ व्हिच वंस चैंपियन लाइट टच रेगुलेशन दिस प्री क्राइसिस बिहेवियर इज बीइंग क्रिटिसाइज्ड एज सरेंडर टू बैंक्स और एज ए सेल्फ सर्विंग डिवाइस फॉर अट्रैक्टिंग फाइनेंशियल एक्टिविटी टू ब्रिटेन तो से कौन कर ना ब्रिटेन रे यही प्रकार एक्टिविटी देखो जो ब्रिटेन रे गोटे टाइम रे लाइट टच रेगुलेशन रे कौन करथिला चैंपियन करथिला माने सपोर्ट करथिला आज देखो से ब्रिटेन कौन कर सरेंडर टू बैंक्स ए सेंस रे आसलानी जानि पर लिखा इन ट्रूथ इट वाज एन आइटर नेक्स्ट स्लाइड को जीवा कौन लिखा दिस सिंपल बिलीव दैट मार्केट्स आर बेटर देन गवर्नमेंट एट एलोकेटिंग सर्विसेज माने बुझी पाला ना जेतले फाइनेंशियल रेगुलेटर को अधिका जरूरत से ज़्यादा फ्रीडम देव ताले गोटे मार्केट जोटा कि गोटे देशर इकोनॉमी को कंट्रोल करे तार पावरटा क्या हाथ रहा था गवर्नमेंट रहा था बट बर्तमान गवर्नमेंट हाथ रहा कि से पावरटा टोटाल पलैला कौन फाइनेंशियल रेगुलेटर मान पाखु माने से मैनिपुलेट करेंगे जिते तुम मार्केट रेगुलेटर मान गवर्नमेंट कंट्रोल रिलैक्स कर से पावर बढ़ेदेल ताने तुम कौन कहल आई नो बेटर देन द गवर्नमेंट पॉलिसी ताहले जो बिजनेस कॉर्पोरेट मैंने आसवे से गवर्नमेंट पॉलिसी के बेटर हो पार फॉर द इकोनॉमी हो पार ना तो ब्रिटेन ये मार्केट क्राइसिस सफर कला एक्जाक्टली दिस इज द पॉइंट से कह चेष्टा कर इन अमेरिका रे मध्य कौन कहते रेगुलेटर्स वेयर रिलक्टेंट टू सप्रेस इनोवेशन बिकॉज दे फेल्ट दैट द सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ लेंडिंग इंस्टीट्यूशन विल बी एनफ टू एनश्योर दैट दे ऑल डिड नॉट लीव फ्रॉम द सेम टॉल बिल्डिंग मैंने अमेरिका रे कौन है गोटे रंग कनसेप्ट पलि आसला जो बिजनेस लोक मैंने सब निजर प्रॉफिट देखुवे तेणु प्रॉफिट देले आम कंपनी सेफ रही बिजनेस के चाहिए जे लॉस रे जीव बट दैट इज रंग ना आम ये गोटे एग्जांपल दे पारिया गोटे रजार आ गोटे माकड़ हाथ में रजा गोटे खंडाटे देता मत जब है बोली कौन है रजार नाक कटिगला ना नहीं दैट इज द लॉजिक तो यहाँ से कह चेष्टा कर नाउ आई विल गो टू द नेक्स्ट पैराग्राफ लिखाई कौन इन रिच कंट्रीज enthusiasm for prescriptive supervision depends on the degree of harm suffered during the banking crisis or to the threat from the failing banks to bring down their government with them माने से कौन कही ना प्रेस्क्रिप्टिव सुपरविजन माने रिच कंट्री माने कहते मार्केट को कंट्रोल करा पड़े तो आम किसी रूल्स एनफोर्स करवा ताकू कह प्रेस्क्रिप्टिव सुपरविजन माने फाइनेंशियल सुपरविजन एटा डिपेंड कर दुईटा जिनस ना बैंकिंग क्राइसिस रे इकोनॉमीटा केते हार्म सफर करथिला और ना बैंक जदि
फेल है ता द्वारा से गवर्नमेंट को फेल करिवारे केते दूर संपर्क जिन जानथि अमेरिकन में क्रैश हो गला काहे जेपी मॉर्गन एंड स्टैनली सेटा भांगी गला तार बैंकिंग इंस्टीट्यूट गोटे कंट्री डैमेज है माने इकोनॉमी डैमेज है गवर्नमेंट डाउन है जानि पाल तो ये दुटा फैक्टर ऊपर डिपेंड करे बट अथर कौन कहते बट इट इज नॉट इजी टू स्टॉप बैंक्स फ्रॉम मेकिंग बैड डिसीजंस माने बैंक जो बैड डिसीजन कब ताको आम सुधारिबाटा एत सहज नहीं अथर कहते in the past regulator left it to the market to judge the health of the bank आग टाइम रे कौन होता रेगुलेटर माने कौन मार्केट ऊपर को छाड़ दौले कौन कले बैंकटा ठीक रहिबो बट क्लेवर वेल पेड एनालिस्ट फेल्ड टू सी द क्राइसिस कमिंग मात्र ए टाइम रे कौन है ना से मार्केटा ए क्राइसिसटा जो आसु ताको से एंटीसिपेट करि पारला नहीं तेणु नाउ सेंट्रल बैंकर्स आर एक्सपेक्टेड टू डू ए बेटर जॉब वन प्रॉब्लम इज दैट the rules and laws are written with the benefit of hindsight hindsight meaning कौन इमिति करिथिले भल होइतांत अरे तू एटा परे भाबुछ ना तो पूर्वरु एंटीसिपेट कर भाबिया कथा तो से कहूछ जे बैंकिंग क्राइसिस आसिलानी तो वर्तमान जो बैंकिंग क्राइसिस जो आसीबो ताको डील करर दायित्व काको दिया जाउची ना दिया जाउची जे सेंट्रल बैंकर्स मानको दिया जाउची बट सेंट्रल बैंकर्स प्रॉब्लम कौन अछि ना से माने गोटे क्राइसिस हेला पर सिखि परिबे ना ताको प्रिवेंट करियार आइडिया तांका पाखरे नहीं the good ideas that may have prevented the last crisis however can make regulators dangerously overconfident about being able to predict and prevent the next one and also if regulators underwrite certain strategies that seem safe such as lending to small business they may encourage banks to crowd into those line of business हमने एटे कोन कहै से एटे बर्तन कहै जे सेंट्रल बैंकर्स माने जो मान को बर्तन दायित्व दिया दे जे फाइनेंस क्राइसिस को प्रिवेंट करिवो से मान पर ओरिजिनल आइडियास नहीं ताको जदि पचरियो व्हाट इज द सॉल्यूशन माने क्रिएटिवली ताके भाबी पारियन ताके भाबी पारे जे 1930 रे जो क्राइसिस हेतिला 2008 जो क्राइसिस हेतिला एटा पे हेतिला एटा काम करथिला तो हमें से रूल को हम अप्लाई करिया बट इट इज जस्ट लाइक तते डायबिटीज हेतिला माने तो डायबिटीज रा मेडिसिन खाइजो तते काली कैंसर हला तो डायबिटीज मेडिसिन खाइले कोन कैंसर ठीक हे जीवो कि हबनी हबो कि तो से लॉजिकटा से कहै दैट इज द प्रॉब्लम गेटिंग इट यू हैव टू अंडरस्टैंड इट तापर से सेकंड कोन कहला ना जो गुड आइडियाज कहै से गुड आइडियाज माने कोन ना 2008 पर जो क्राइसिस हला बैंक माने स्ट्रेटजी कहले जे कोन ना हम स्मॉल बिजनेस को लेंडिंग दबा माने मार्केटटा स्टेबल रहबो तो जदि से पॉलिसी एबे करियो माने कोन हबो सब तक बैंक सब काम छाड़ी खाली से गोटे जिनस को जीवे तो सेमिति कल तो ओवरऑल सिस्टमटा कोलैप्स हो जीवो नो कि तो ये जिनसरा से बतै छी इफ enough bank pile into this market downturns in them can affect not just a few bank but the whole system जो हम कहले सिस्टमटा क्रैश हो जीवो on the other hand prescriptive suppression can stifle the meaningless choke financial innovation and squeeze all appetite for risk out of the banking system तमन से कौन आजिकल बैंकिंग सिस्टम दिन चली से जब जरूर से ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन दब लोक ने बैंक आसवा ही बंद करदे सो इट इज सच ए डेलिकेट सिचुएशन से कही इन जापान आर गोटे एग्जांपल देछि जे केमिति ना जदि जरूर से ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन करदेबू माने कौन हम ना लोक मानकर बैंकिंग कौन कहते भरोसाटे उठीज एग्जांपल देछि कौन जापान रे ए बैंकिंग क्राइसिस जोटा स्टार्टेड है 2 डिकेड्स एगो एपर्यंत अच्छे लिंगर्स कंटिन्यू कर जापान गोटे एग्जांपल दिखाई कौन कहे इन पार्ट बिकज मैंने रिजन कही द कंट्री बैंकर मैंने हैव बिकम गन शाय मीनिंग है कौन दे डू नॉट टेक प्रॉपर रिस्क नियंतनी जरूरत से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिजर्वेटिव हो गले एंड टेंड टू बाय गवर्नमेंट बॉन्ड्स रादर देन लेंड मनी और मेक फॉरेन इन्वेस्टमेंट जापान बैंकिंग सिस्टम थरे रिस्क रे एमती गोटे कन्सिक्वेंस नहीं सी बर्तमान कौन कर कहूँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट करें जोटी आम जापानीज गवर्नमेंट बॉन्ड दूचे मुझे काम करी आम रिस्क न ना बैंकिंग ग्रो कि कर ना तो ता द्वारा कौन हम ना प्रोस्पेक्टिव ग्रोथ तोर हेम्पर हो गला ये हूँ कनसेप्ट गाड़ीटे किणिलु मार्केट रे ओला चलेबू तू घरे बसले कौन तू प्रॉफिट पाई पारिबू गाड़ीटा धरिक मार्केट आसवा पड़ो जिते रिस्क थे मतलब आगू जावा पड़ो ना नहीं तो मूलर न जीवन किसी हेन ना तो यहाँ जापान कंडीशन से बताई गेटिंग इट अब लिखा कौन रेगुलेटर्स आर डूइंग ऑल दे कैन डू टू स्ट्राइक ए बैलेंस एंड मिटिगेट दिस रिस्क रेगुलेटर मैंने चेष्टा कर तो यहाँ हूँ कनसेप्ट तो पैसेज कौन है ना से कहे फाइनेंशियल रिकग्निशन आज आम करमी तार गोटे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देती हाँ ना नहीं तो ये क्वेश्चन जाक देखा चूज द वर्ड व्हिच इज मोस्ट सेम इन मीनिंग टू द वर्ड लास्ट आज यूज्ड इन द पैसेज लास्ट ये कौन वर्ड अच्छी कि
Let us look at that option here. So what about it nahi? So let us leave this question. Ago jiba. Which of the following is the central idea of the passage? It's a good question. Regulators are lazy. Nahi. Banks should go back to traditional banking. Jamar nahi. Banks in developed countries have destroyed nahi. Answer about today the task of financial regulation is tricky. तो answer it D करिबो. Clear? Next को देखिबा. लिखा है क्राउड. क्राउड रो सिनोनिम पचार ना. क्राउड रो मीनिंग हबा फ्लॉक. फ्लॉक माने कौन गोटे जगह को जीवा. सर ये आपण मल्टीट्यूड काई कलेनी ना. ये क्राउड वर्ड टा गोटे वर्ब रूप रे यूज होई छी. मो कभी देयर इज ए क्राउड माने एठी क्राउड टा नाउन हैला. ता माने आंसर करे मल्टीट्यूड. मो कभी मेनी पीपल क्राउड द बरमपुर टिफिन दुकान माने एठी कोन आसुचंती. एठी वर्ब रूप रे यूज हैला. त आंसर एठी हम कोन करिया फ्लॉक करिया. फ्लॉक रा मीनिंग होते से आसीबो वर्ब रूप रे. गेटिंग इट. नेक्स्ट देखिबा. Which of the following is the possible impact of prescriptive regulation? Prescriptive regulation the impact टा कौन ना. फर्स्ट कोई कौन governments are likely to collapse as people are opposed to such measures. People are opposed विषय लिखा है नहीं. Many executives are likely to exploit the system not mentioned. These measures could unintentionally prolong a crisis. हाँ एटा ही परिबा. प्रेस्क्रिप्टिव तरह कोन क्राइसिस टा बढ़ी जाय पर आंसर एटा सी करियो. क्लियर. नेक्स्ट व्हाट इज द ऑथर व्यूज ऑफ सेंट्रल बैंक्स प्रेजेंट एफर्ट एट वर्क. दे आर अननेसेसरी तो कहो नहीं. तब लिखा है दीज आर फॉल्टी आज दे एनकरेज रिस्की फाइनेंशियल. एनकरेज करंतनी एटा काटी दबो. To succeed, these should be coordinated and uniform across countries. The measures they prescribe have no loopholes. एटा भूल हबो. They have done their best to effectively regulate. एटा ठीक हबो कारण they are doing their best ବୋଲି लास्ट paragraph पे मेंशन अछि. Next, which of the following can be said about the light touch regulation adopted by Britain? तो एटी कोन करिबा. लिखिबा कोन लाइट. It gave British financial institution very little autonomy. It forced bank to invest in government bond. ना एटा जापान विषय रहितला. It resulted in banks holding too much capital. It encouraged bank financial activity. It stifled bank appetite for risk. Appetite for risk टा जापान सेंस रा स्लाइड आंसर ए करिवो. very little autonomy हबो. तापर लिखा छै कोन मोस्ट इन द वर्ड सेम. लिमिट. लिमिट रा मीनिंग कोन गोट जिंस को रेस्ट्रिक्शन करिवो. त आंसर डी हबो ए कैप्स. Okay, the value of your property is capped at $5 million. माने तार लिमिट टाको सेट कराय छै. तो आंसर एटी कैप्स करिवो ए हबो. नेक्स्ट जिबा. which of the following is true in the context of the passage? कोन लिखा छै the financial crisis of 2000 did not impact. wrong. the market can easily regulate themselves. जमारो नहीं. एटा आंसर कोन लिखा छै developing economy should not allow foreign investment. जमारो नहीं. After the crisis, American Central Bank has imposed unnecessary regulation. तबरे none of the given statement is true. कुड़ा करेक्ट हबो. एटा ई करिबा. none of the given sentence is true. नेक्स्ट को जिबा. Why has the author cited the reference of repealing the Glass-Steagall Act? काहे to indicate that regulations were relaxed without appreciating the impact of the economy. बिल्कुल एटा कहिला. क्रिटिसाइज टा काहे हबनी ना. एटा लोक माने क्रिटिसाइज करथिले जो माने एक्ट टा को रिपील करले. एटा ऑथर विषय रे पचार छै हला. इजी. नेक्स्ट को देखिबा. which of the following difficulties is faced by regulators at present? तो रेगुलेटर्स मान का प्रेजेंट कोन अछि. फर्स्ट लिखा है जे bankers lack the expertise to comply with norms. tremendous competition between local and foreign banks लिखा है नहीं. striking a balance between protecting and stifling the economy. एटा हबा परफेक्ट आंसर. unwillingness of the government not mentioned. manpower not mentioned. एटा तमर सी करियो. ओवर. तब आगो देखिबा कोन क्वेश्चन अछि. yes 43 to 45 से कहै छै choose the word among the given option which has either the most similar or opposite meaning. withering. withering ର meaning हला weak. weak ର opposite आंसर कोन गला scathing. scathing ର meaning हबा strong. एटा antonym सेंस रे आसीबो. क्लियर हे गला. चेन देबे देखिए 50 रे एंड वर्ड दे छै कोना एंटीडिलुवियन.
एंटीडिल्यूवियन मीनिंग कौन बुझीपार एटा रॉन्ग प्लेस रॉन्ग टाइम टाइम सेंस रे वर्ड आछे तेना आर आंसर हम कौन कर पारे सिनोनिम हबो ऑब्सोलेंट ऑब्सोलेट रे मीनिंग मध्ये कोन नॉट एक्जिस्टिंग नॉट रिलेवेंट इन प्रेजेंट सिनोनिम हबो okay so these are the 50 questions which we have discussed okay or there are more questions let us say yes amar ago question achi so let us go for it सेटा कोन करछि ना we have to choose the correct option जोटे के तीनटा सेंटेंस को कंबाइन कर पारियो व्हाट इज द अप्रोच चलो सेंटेंस को पढ़ी के देखिबा तो फर्स्ट लिखि छी a study on the cost of air pollution was co-authored by the world bank 2 years ago but study टा हेछि on the cost of air pollution it found that मान it माने का बुझाला स्टडी को कहला the country lost 1.4 million lives due to such contamination air pollution संगे contamination आसीबो सेमिति it shaved off a massive 8.5% of the GDP माने ए स्टडी रो रिजल्ट को बतैला ताले हम कोड लिखि परिया ना तक if टा जमा रहबने कारण if is used for condition आगो काट देलिया को a and c टा करेक्ट हो किन देबो देखो 2 years ago इन लिखिबा a study on the cost of air pollution co-authored by the World Bank found that the country lost 1.4 million lives due to such contamination and shaved off a massive 8.5% of the GDP. Clear? सेमती 3 रे मते देखो एटी 2 लिखा छै एटा एक्चुअली 2 इयर्स हबो तो 2 इयर्स हबो वाले मते हे परिबो तो एटी आई जगह रे इट जदी हम लिखिबा त आंसर कोन हबो इट वाज 2 इयर्स एगो व्हेन गेटिंग इट a study on the cost of air pollution co-authored by the World Bank found that country lost 1.4 million lives due to and saved off 8.5% of GDP हे परछि ना त आंसर कोन छै ओनली A and C ऑप्शन डी करियो क्लियर सेमते जे बाइट कि जवाहरलाल नेहरू स्पेलिंग टिके भूल अछि सॉरी फॉर दैट डिसाइडेड टू जॉइन द कॉमनवेल्थ हबो तबरे वॉइसेस ऑन द लेफ्ट राइट एंड सेंटर expressed discomfort why they saw it as a needless affiliation with the foreigner colonial power तामाने एटा कोन जवाहरलाल नेहरू जेतरे डिसाइड कला परे ताको ने कि से घटना चारियाडे कोन कोन के फील कले काई फील कले रीजन टा देछि ये सुननो एडी हम इफ लिखियार आवश्यकता नाही कारण इफ टा कंडीशन वेदर लिखियार आवश्यकता नाही कारण वेदर टा होछि चॉइस आंसर केवल व्हेन हबो तो व्हेन लिखले सेंटेंस लिखिया केंदी now when Jawaharlal Nehru decided to join the Commonwealth after independence voices on the left right and center expressed discomfort as they saw it as a needless affiliation माने association with the former colonial power तो आंसर टे कोन हबो ओनली बी क्लियर ना नेक्स्ट को जिबा एडिशन लिखा छै यू हैव टू चूज 5 कनेक्टर्स आर गिवन कोडा को हम चूज कर परिबा चलो देखिया सेंटेंस टा पढिया फर्स्ट टे कोन लिखा छै It looks like you can buy the antique jewelry for about 1000 rupees. Some late bidder jumps in and kicks up the price. मैंने एटा कंडीशन देला आमे किनी परिबा एंटिक टा को 1000 रुपीस रे जे पर्यंत गोटे लेट बिडर जॉइन करके प्राइस टा न बढ़े देछि कंडीशन सेंस रे वर्ड आसिले नॉट ओनली हबनी येट हबनी व्हेन एवर हबनी किछि हबनी आंसर हबो केवल अनलेस आंसर एटा ए हो गेटिंग इट क्लियरली एटा हबो अनलेस ना अनलेस हला पर सेंती 49 टा में देखिबा पड़िबा कोन लिखाइ छै वी हैड बुक्ड आवर फ्लाइट अर्लियर ओके इट वुडंट हैव बीन चीपर आर मीनिंग कोन होछि थर्ड कंडीशन जदी भी आमे फ्लाइट टा 2 दिन पूर्व कले मध्ये कॉस्ट टा सेम रहि थांता तो एटा गोटे कॉन्ट्राडिक्शन सेंस रे असला बिटवीन हबनी वेयर हबनी अंटिल हबनी देन हबनी व्हाट इज द करेक्ट आंसर इज ओनली डी इवन इफ आंसर टा आरंभ पर लिखि परिया कौन लिखिबा even if we had booked our flight earlier it would not have been cheaper clear understand it like this तापर जीवा next this is question number 50 let us go for it कौन लिखा है Michelangelo clearly possessed a prowess in art prowess meaning है talent he was historically known for his sculpture and paintings तामने कौन होची ए दुटा सेंटेंस को जने जने को सपोर्ट कर से कहूँ जे माइकलएंजेलो पाखे टैलेंट थिला आर्ट रो तेणु करी ताकू कोन त स्कल्पचर एंड पेंटिंग में वर्ल्ड फेमस होइतिला तेणु एटी कोन ओनली इफ व्हाट आल्सो हवा दरकार ने देन हवा दरकार आंसर करियो डी ओनली देयरफॉर एटी कोन हबो माइकलएंजेलो क्लियरली possessed a prowess in art therefore he was historically known for his sculpture and painting एनकले कांसेप्ट क्लियर हो गला so we have discussed about 50 questions today okay now
any type of extra जदि banking exam में preparation करछो English रो, if I have to discuss that strategy, then let me remind English strategy रे तमे मन रखिता पहिले ए गुडा को होची तम पे important. First is reading comprehension. This is the most important topic जब से तुमको जानियार अछि. So reading comprehension means what? Is it actually understanding? Supposing I always say in class, mo class plan को जिनसे पचाए, sir exactly tell me what is the meaning of comprehension. You know that I'll tell you. So कौन होची point? Supposing जनो mo पचाले Ram said to Lakshman, I will kill you if you repeat this. कौन कहले? Ram said to Lakshman, I will kill you if you repeat this. तुम कौन बुझिलो? पिला मैंने ट्रांसलेशन कर दौरान कौन कहते राम लखन कहले जे तू एटा रिपीट कले मुझे मारिदेवी. गुड, बट आई एम नॉट आस्किंग फॉर ट्रांसलेशन, आई एम आस्किंग फॉर कम्प्रिहेंशन. कम्प्रिहेंशन अर्थ कौन हम? राम गेव लक्ष्मण ए वार्निंग, हाँ ना नहीं एमती बुझे ना. सो यू आर रीडिंग ट्रांसलेशन माने गाड़ी पलैब, कारण तुम वर्ड मीनिंग जानी माने कह मीनिंग न जानते यू आर गन देन गाड़ी से रहा ना नहीं. बट कम्प्रिहेंशन मीनिंग होची कौन? ओवरऑल मीनिंग टा बुझे. It is a skill which you have to learn. मो मानकर कहे जवाहरलाल नेहरू इज द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. तुम कौन बुझे सब बेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? नो, इट इज एन ओपिनियन. तो हो पारती, मो तो नुह. जदि मुझे कहि जवाहरलाल नेहरू इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कौन बुझ? इट इज ए फैक्ट. यहाँ किए अपोज कर ना. तो प्रथम जिनसा है कौन? गोटे ओपिनियन थिला, यहाँ कौन है? गोटे फैक्ट आसला. से मुझे कहि देयरफॉर जवाहरलाल नेहरू इज द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यहाँ कौन बुझा? इट इज ए कनक्लूजन, माने गोटे फैक्ट को लेकिन कनक्लूजन देछि. तो जिते क्वेश्चन आसे ए पैसेज रे कौन अच्छी, इट इज नॉट जस्ट न्यू वोकाबुलरी एंड कौन कहते कहले तुम खाली ट्रांसलेशन. दैट मीन्स यू शुड बी एबल टू टेल एटा हूँ गोटे फैक्ट, एटा ओपिनियन, एटा गोटे इन्फरेन्स, एटा गोटे कनक्लूजन. ओके, दिस आर द प्रिमाइज. एमती भाव में भाविबा, दैट इज ए सेट ऑफ स्किल्स. तापे तुमको कौन करा पड़ो? रेगुलरली बसिक रीडिंग कम्प्रिहेंशन पढ़ा पड़ो. And don't miss our classes. And before we wind up for today's session, my humble request to all of you, those who are watching this video, do come for a demo at Sreedhar CCV. We are waiting for you. God bless you. Good luck for your future. I'll see you in your next class. Goodbye.